Guru Prakash, I have the notification here with me in my hand. I'm sure you've read it too. आप ये बताइए आपत्तिजनक कंटेंट क्या होता है? What is an objectionable content? No, Pranesh, I think you are fairly senior to assess what is Appattijanak, what is Rashtravirodhi, what is anti-national, and who are the Afwatantra. I don't think I need to throw any light or elucidate upon tonight it. you will have The to throw problem light, is sir. that I when can't someone make is trying sense to of combat misinformation. I can't make sense of this. No. What is? How do you define? No, you are a student of Constitution, Pranesh. You go through the Article 19. Freedom of speech and expression comes with a set of reasonable restrictions. You don't need to throw, you don't want me to throw some light, but you just need to go open the Constitution of India. Just go and read the Article 19. It comes with a reasonable restriction. No one can pose any threat to the unity and integrity of our country. I don't understand this. This is clearly beyond my comprehension. You want to type anything, you want to disseminate anything, even that at the cost of the unity and integrity of our country. This is beyond my comprehension. An honest effort has been initiated by the government of Uttar Pradesh to combat misinformation, to promote accountability, to fix the accountability. But look at all the opposition parties. Look at all the India Alliance leadership coming and setting up. There is a saying in Hindi, चोर की दाढ़ी में तिनका. अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है. आप लोगों ने पहले ही तय कर लिया कि आप लोग एंटी नेशनल सेंटीमेंट को फ्लेयर करने वाले हैं. नहीं, एंटी नेशनल सेंटीमेंट इज वन. नो, 1 minute. Guru Prakash, there's a distinction here. 1 minute. Guru Prakash, 1 minute. Let's go one by one. ये तो आपत्तिजनक तो इज ओनली वन पार्ट. एंटी नेशनल पे तो मैंने नहीं पूछा आपको सवाल. इसमें लिखा हुआ है किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए. अभद्र मैं समझ सकता हूं, अश्लील मैं समझ सकता हूं, राष्ट्र विरोधी भी ठीक है. उस पे ये बोलेंगे, हमारे साथ विवेक जी है, वो बोलेंगे राष्ट्र विरोधी स्टेट कैसे तय करेगा. तो वो जवाब आप दीजिएगा जब वो पूछेंगे. मेरा क्वेश्चन पहला ये था, आपत्तिजनक क्या है. इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, जैसे पहले डिबेट में मैंने पूछा, दैट क्वेश्चन टू द टीएमसी कुड हैव बीन ऑब्जेक्शनेबल, तो जेल हो जाएगी मुझे. No. You were fixing accountability, Pranesh. आपने आपत्तिजनक क्या पूछा था? आपने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की जवाबदेही तय की थी. यही हम भी करना चाहते हैं. तो ये अगर किसी ने सोशल मीडिया पे योगी जी की जवाबदेही तय कर दी, तो आप तो उसको तय कर देंगे. उत्तर प्रदेश की जनता को पूरा अधिकार है हमारी जवाबदेही तय करने की. एज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द रूलिंग पार्टी, आई से दिस. I have that authority, but you have to adhere to certain standards, Pranesh. I think this is a globally settled question. This is a globally settled debate. You cannot go out and post anything which is a threat to unity and integrity of our country.